what to buy, a flat or a plot. Let me give you two major reasons जो आपके buying decision को affect करेगा. Number one is the cost. जब हम एक plot buy करने जाते हैं, so the total cost of the plot is considered, not the construction cost over it. In most cases, जो total cost of plot होता है with construction is way ahead than the total cost of the flat. In addition to that, जब हम एक flat buy करते हैं तो हम जो total payment है वो 4 to 5 phases में भी pay कर सकते हैं, but this is not the case with the plots. आपको सारा payment upfront करना होता है. Second is the maintenance cost. अगर आपने decide कर लिया that you want to buy a flat, तो आपकी जो maintenance cost है वो fix रहेगी, क्योंकि वो सब कुछ मैनेज किया जाएगा सोसाइटीज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू. तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको प्लॉट बाय करना है तो आपको सब कुछ अपने आप मैनेज करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, मेंटेनिंग, सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड एवरीथिंग. So, in the case of flats, everything is managed by RWA, but this is not the case with plots. You have to be responsible for your own property. So, if you are willing to take some risk and you are ready to maintain and construct your own property, and especially you are a firm believer of Vastu, so that you get everything according to your directions, you can definitely go for plots. But at the same time, आप कोई हैसल नहीं लेना चाहते हो, आपको नहीं करना है कंस्ट्रक्शन, ना ही सिक्योरिटी गार्ड्स की टेंशन लेनी है, ना ही मेंटेनेंस की टेंशन लेनी है, you can definitely go for flat. So comment down your choice and share it with someone who may need it. Thank you.